हेलो गाइस। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम स्कॉट लैंग एंड हैंक पीएम। प्रोडक्शन by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पेटम रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड McKay, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलिस, माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal, music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio, distributed Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright
could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rude to play Lang in May 2014. Wright left the project city's creative different. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rude. Filming took place between August and दिसंबर 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पीटर रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली कोरिस्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रुसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो। मोशन पिक्चर रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas, and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology, and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and Wright shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project city's creative different. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पीटर रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली कोरिस्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रुसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो। मोशन पिक्चर रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू
एंटमैन एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hearing of Road to Play. Lang in May 2014, Wright left the project citing creative difference. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Road. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्स्ट कप क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पेटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distributed Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hearing of Road to Play. Lang in May 2014, Wright left the project citing creative difference. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed
was brought in to the replace writer Mike McKay was hired to contribute to the script with Road. Filming took place between अगस्त and दिसंबर 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्कप कॉन्टमैन। डायरेक्टर बाय पीटम रीड, स्क्रीन प्ले एडजर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडजर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रूसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas, and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology, and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish. By April 2011, Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film. In July 2012, pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and दिसंबर 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्कप कॉन्टमैन। डायरेक्टर बाय पीटम रीड, स्क्रीन प्ले एडजर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडजर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रूसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production
by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पेटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distributed Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and
दिसंबर 2014 15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पेटम रीड, स्क्रीन प्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक गेवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रूसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू, एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish. By April 2011, Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film. In July 2012, pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014 15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पेटम रीड, स्क्रीन प्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक गेवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रूसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू, एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe.
MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It star Rudd as Scott Lang, Ant-Man alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym in the film. Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वास्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पेटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू. एंटमैन. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It star Rudd as Scott Lang, Ant-Man alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym in the film. Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वास्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय
Peyton Reed, screenplay Edgar Wright, Joe Cornish, Edmund Emske, Paul Rudd, story by Edgar Wright, Joe Cornish, based on Ant-Man by Staley, Larry Liver, Jack Avery, production by Kevin Feige, starting Paul Rudd, Evelyn Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Wood Harris, cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal, music by Christoph Beck, production company Marvel Studio, distribute Walt Disney Studio, motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वास्प क्वांटमैन, डायरेक्टर बाय पेटम रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड एम्स्के, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली, लैरी लाइवर, जैक एवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलिस, माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Wood Harris, cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal, music by Christoph Beck, production company Marvel Studio, distribute Walt Disney Studio, motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside
Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Payne, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. And the film Lang must help defend fame Ant-Man, shrinking technology and plot a highest with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्कशॉप क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडजर राइट जोए कॉर्निस एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निस बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Payne, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. And the film Lang must help defend fame Ant-Man, shrinking technology and plot a highest with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्कशॉप क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडजर राइट जोए कॉर्निश एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर
Jack Cavery, production by Kevin Feige, starting Paul Rudd, Evelyn Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal, music by Christoph Beck, production company Marvel Studio, distribute Walt Disney Studio, motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish. By April 2011, Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film. In July 2012, pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish. The following month, Reed was brought in to the replace Wright, or McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वास्प क्वांटमैन, डायरेक्टर बाय पेटम रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड McKay, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal, music by Christoph Beck, production company Marvel Studio, distribute Walt Disney Studio, motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David
Rashmilashmi and Michael Douglas and Hank Pym in the film. Lang must help defend Pym Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative different thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वास्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Rashmilashmi, and Michael Douglas and Hank Pym in the film. Lang must help defend Pym Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative different thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वास्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan
Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish. By April 2011, Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film. In July 2012, pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish. The following month, Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018। एंटमैन द वास्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पेटम रीड। स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड एम्सके, पॉल रूड। स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश। बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी। प्रोडक्शन बाय केविन फिज। स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलिस, माइकल Pinep, Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter. Edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distributed Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide
Ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटर रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015 यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology, and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang. In May 2014, Wright left the project citing creative difference. Thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पीटर रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015 यूनाइटेड स्टेट।
रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018। एंटमैन द वास्प क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पेटम रीड। स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमन McKay, पॉल रूड। स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश। बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी। प्रोडक्शन बाय केविन फिज। स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलिस, माइकल Pinep, Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter. Edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distributed Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish
had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hearing of Road to play. Lang in May 2014, Wright left the project city's creative different, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Road. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष कॉन्टमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडजर राइट जोए कॉर्निस एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निस बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas, and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology, and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hearing of Road to play. Lang in May 2014, Wright left the project city's creative different, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Road. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष कॉन्टमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडजर राइट जोए कॉर्निश एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Wood Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distributed Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन.
बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace Wright, or Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष क्वांटमैन। डायरेक्टर बाय पीटम रीड, स्क्रीनप्ले एडगर राइट, जोए कॉर्निश, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडगर राइट, जोए कॉर्निश, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरी स्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेव, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, बुड हैरिस। सिनेमाटोग्राफी रूसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक। प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर। रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put
on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project city's creative different, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष कप कॉन्टमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीन प्ले एडजर राइट जोए कॉर्निस एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निस बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio. Motion picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project city's creative different, thought he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष कप कॉन्टमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीन प्ले एडजर राइट जोए कॉर्निश एडमंड एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरिस्टोल बॉबी कर्नेलिस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Macklin, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio Motion Picture release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट। रनिंग टाइम 117 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 130 से 169 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hearing of right to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish. The following month, Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014-15. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वर्ष कॉन्टमैन डायरेक्टर बाय पीटम रीड स्क्रीनप्ले एडजर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडजर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज की मूवी का रिव्यू एंटमैन. एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing
creative different thought. He still received screenplay and story credit with Cornish. The following month, Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Road. Filming took place between अगस्त and दिसंबर 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वर्षकप कॉन्टमैन, डायरेक्टर बाय पीटम रीड, स्क्रीन प्ले एडजर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडजर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरिस्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेप, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस, सिनेमाटोग्राफी रुसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू, एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म based on the Marvel comic character of the same name, Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam McKay. Paul Rudd. It stars Rudd as Scott Lang, Ant-Man, alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip T.I. Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judd Gray, Abbey Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas, and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Ant-Man, shrinking technology, and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed 3 drafts of the script and rewrite shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative different thought. He still received screenplay and story credit with Cornish. The following month, Reed was brought in to the replace writer. Mike MSK was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and दिसंबर 2014-15। एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018, एंटमैन द वर्षकप कॉन्टमैन, डायरेक्टर बाय पीटम रीड, स्क्रीन प्ले एडजर राइट, जोए कॉर्निस, एडमंड एम्सके, पॉल रूड, स्टोरी बाय एडजर राइट, जोए कॉर्निस, बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर, जैक केवरी, प्रोडक्शन बाय केविन फिज, स्टार्टिंग पॉल रूड, एवलिन लिली, कोरिस्टोल, बॉबी कर्नेलियस, माइकल पिनेप, टिप टाइरेलिस, एंथनी मैकलिन, वुड हैरिस, सिनेमाटोग्राफी रुसल कारपेंटर, एडिट बाय डैन लेवेंटल, म्यूजिक बाय क्रिस्टोफ बेक, प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूट वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मोशन पिक्चर, रिलीज डेट 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट, रनिंग टाइम 117 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 130 से 169 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 519.3 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की मूवी का रिव्यू, एंटमैन। एंटमैन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म
based on the Marvel comic character of the same name. Scott Lang and Hank Pym. Production by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is the 12th film in the Marvel Cinematic Universe. MCU. The film was directed by Peyton Reed from a screenplay by the writing teams of Edgar Wright, Joe Cornish, and Adam MCQ. Paul Rudd. It starred Rudd as Scott Lang, Ant-Man alongside Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena, Tip, T.I. Harris, Anthony Mackie, Bud Harris, Judd Gray, Avi Ryder, Fortson, David Dastmalchian, and Michael Douglas and Hank Pym. In the film, Lang must help defend Pym, Ant-Man, shrinking technology and plot a heist with worldwide ramification. Development of Ant-Man began in April 2006 with the hiring of Wright to direct and co-write with Cornish by April 2011. Wright and Cornish had completed three drafts of the script and Wright shoot test footage for the film in July 2012. Pre-production began in October 2013 after being put on hold so that Wright could complete the world, and casting began in December 2013 with the hiring of Rudd to play Lang in May 2014. Wright left the project citing creative difference, though he still received screenplay and story credit with Cornish the following month. Reed was brought in to the replace writer. Mike McKay was hired to contribute to the script with Rudd. Filming took place between August and December 2014. एंटमैन ऑफ द वर्ष 2018 एंटमैन द वास्प क्वांटमैन डायरेक्टर बाय पेटम रीड स्क्रीनप्ले एडगर राइट जोए कॉर्निश एडमन एम्सके पॉल रूड स्टोरी बाय एडगर राइट जोए कॉर्निश बेस्ड ऑन एंटमैन बाय स्टेली लैरी लाइवर जैक केवरी प्रोडक्शन बाय केविन फिज स्टार्टिंग पॉल रूड एवलिन लिली कोरी स्टोल बॉबी कर्नेलियस माइकल Pinep, Tip Tyrellis, Anthony Mackie, Bud Harris. Cinematography Russell Carpenter, edited by Dan Leventhal. Music by Christoph Beck. Production company Marvel Studio. Distribute Walt Disney Studio Motion Picture. Release date 29 जून 2015, 17 जुलाई 2015, यूनाइटेड स्टेट. रनिंग टाइम 117 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 130 से 169 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 519.3 मिलियन. बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं.